Jai Shri Ram everyone, welcome back to my channel English with Desi Madam. My name is Rita and how are you friends? I hope you all guys are doing very well. So friends, in today's video, I am going to share with you my 100 days English speaking journey because today I have completed my 100 days English speaking journey. Okay, so in this video, I'm going to share with you all the tips, all the methods which I have applied on my journey and still I am applying this journey. Okay, and all the problems which I faced during this journey and still I am facing these types of problem today now. Okay, so in this video I'm going to share with you all the experience which I have faced, all the problems which I have faced in during my journey, English speaking journey, and how can you learn all the by my experience, by my methods, by my motivation which I have applied on my journey. So this video is going to very helpful, very useful for every English learner who wants to be fluent in English. And please watch the video right till then because this video is going to very helpful. And please don't skip this video. If you skip the video, that means you are going to miss the opportunity that I am going to share with you in today's video. So friends, without any further delay, let's get into the video. But before going to the video, it's my humble request to all of you, if you haven't subscribed my channel, please do subscribe my channel because these things gives me boost to create more and more valuable content for you every day. So friends, let's get into the video. Okay, so friends, today I have completed my 100 days English speaking journey. Okay, so the first question is that how did I started my journey? Okay, so how did I started my journey and why I am learning this language and what tips and tricks I have used and which problem I have faced. So in this video I'm going to share it with all the things. Okay, so the first question is that why am I learning this language? Okay, so the answer is that because I am learning this language because I have a passion for this language from childhood. ओके क्योंकि मुझे बचपन से ही मुझे ये लैंग्वेज बहुत ज़्यादा पसंद थी एंड यू नो दैट आई हैड completed my all the education in Hindi medium school, government school. So there were so many friends in my childhood. Okay, most of the friends were studying in English medium school and I was studying in government school, Hindi medium school. Okay, so when they always talk to each other, okay, and all the time they use English words in conversation, so at that time I feel shy, I feel like that I am so backward. Okay, at that time I feel that. Okay, so I wanted to learn this language from childhood. I have a passion for this language. So initially that time there were no any type of internet, any type of apps. So this desire is ये इच्छा मेरे ना अंदर दबी हुई रह गई कि हाँ मैं लर्निंग सीखूंगी सकूंगी, बस ये इच्छा मेरे अंदर दबी रह गई. ओके, so when I feel comfortable, when I feel that now today it's so easy to learn this language because there are so many things for learning such as internet, such as YouTube. So I started my journey. So this is a reason why am I learning this language, because I have a passion, I have a eager for this language from childhood. Okay, so I am learning this language. And the other reason is that I am learning this language is that मैं चाहती थी कि एक्चुअली आई एम अ गवर्नमेंट टीचर. ओके, आई एम अ गवर्नमेंट टीचर इन कंपोजिट स्कूल ढिमारपुरा एंड दिस द स्कूल इज सिचुएटेड इन अ वेरी रूरल प्लेस. ओके, सो रूरल प्लेस में स्कूल होने के कारण क्या होता है ना, वहाँ के जो बच्चे हैं वो इंग्लिश के प्रति इतना ज़्यादा जागरूक नहीं है. एक्चुअली
they have no environment, okay, they have no surroundings for this learning this language. Okay, most of the students don't know how to speak a single words in English, because in government school and the school which is situated in rural place, so English is very difficult for them. So that's why the second reason is that's why I am learning this language, because first I speak in English in front of the students, then the students automatically speak some words. Even I, if they speak some words, then it is good, okay, it is good for you. And after sometimes when they continue speaking some words, some sentence, and after sometimes I feel that they speak in English, if they speak single 2-3 sentence, it's good for them, okay. बिकॉज देखिए, जब हम लोग हिंदी मीडियम स्कूल में पढ़ते थे तो हम लोगों को भी सेम यही सिचुएशन फेस करनी पड़ती थी, ठीक। बहुत सीधी सी बात है, हिंदी मीडियम स्कूल में पढ़ते हैं और गवर्नमेंट स्कूल में पढ़ते हैं तो वहाँ पे इंग्लिश पर इतना ज़्यादा फोकस नहीं होता है, ठीक है। इस कारण से थोड़ा सा कहीं ना कहीं इंग्लिश के कारण लोग पीछे रह जाते हैं, फिर वो साय करते हैं कि कोई अगर कोई थर्ड पर्सन आ गया, वो बात कर रहा है, इंग्लिश में बात कर रहा है, तो एक मेंटेलिटी बढ़ जाती है, सेट्स सी इज इंटेलिजेंट only. Yeah, that is a mentality and it is not true, that is a mentality, okay. So मैं महसूस करती हूँ, क्योंकि मैंने हिंदी मीडियम स्कूल में पढ़ाई की है, तो मुझे पता है कि कैसा फील होता है कि जब कोई सामने खड़े होके और इंग्लिश के 1-2 वर्ड्स ही बोल देता है या फिर 1-2 सेंटेंस बोल देता है और एट दैट टाइम आप उसको एक आंसर नहीं देते हो, या फिर आप उस कन्नी काटते हो कि मुझे बात ना करनी पड़े, आप इधर उधर कट जाते हो। तो सेम सिचुएशन जो मैंने फेस की है, मुझे लगता है कि इस मेरे स्कूल के बच्चे भी ना फेस करें। सो दैट्स वाई आई एम लर्निंग दिस लैंग्वेज, बिकॉज इफ आई स्पीक इन इंग्लिश, okay, if I will speak in English in front the students, then the students automatically speak in English. and मतलब मैंने तो ये अप्लाई करना शुरू भी कर दिया और बच्चे बहुत अच्छे से इंग्लिश सीख भी रहे हैं। सो दैट इज सेकेंड रीजन व्हाई आई एम लर्निंग दिस लैंग्वेज, ओके। एंड द सेकेंड क्वेश्चन इज दैट how did I take a step to learn this language and how did I started my journey? Okay, so I started my journey before 30 May, okay, because at that time that was summer vacation, okay. So initially आपको बहुत ज़्यादा टाइम देना पड़ेगा। जब आप सिंगल एक सेंटेंस भी नहीं बोलते हैं इसके पहले और आप चाहते हैं कि आप इंग्लिश स्पीकिंग कोर्स करें या इंग्लिश स्पीकिंग बोलें, तो इनिशियली आपको ज़्यादा एफर्ट डालना पड़ेगा, ओके। सो दैट उस समय जो टाइम था वो मेरे लिए बहुत अच्छा था, क्योंकि मेरे स्कूल से मैं फ्री थी तो मैंने सोचा ये जो समर वेकेशन को है ना, इसको क्यों ना मैं बहुत अच्छे से यूज करूँ। सो द 30 मई स्टार्टेड माई जर्नी, आई हैव स्टार्टेड माई जर्नी, ओके। हाउ डिड आई स्टार्टेड? सो simple सा, I know, we know, you know all the rules of grammars, all the we everyone know in English, okay, because हम सभी ने इंग्लिश पढ़ी है from as a subject, okay, but the problem is here हम लोगों ने प्रैक्टिस नहीं की है, स्पीकिंग प्रैक्टिस नहीं की है, okay. So we all know the English rules, okay. So just I remind all the rules, not too deep, only verbally, okay, and just start to listening so many content and English related in English, okay, so many content. After listening so many content, what I do, I did only listening so many and pause the video and started to speaking them, speak out and started to speak out, okay. जैसे मैंने कोई एक सेंटेंस सुना, वाओ सामंथा यू आर सो गॉर्जियस, मैंने सेंटेंस सुना, जस्ट आई पॉज द वीडियो एंड आई स्टार्टेड टू इमिटेट द सेंटेंस, वाओ सामंथा यू आर टू गॉर्जियस, ओके। सो जब बार बार मैंने ये किया, बार बार ये मैंने किया, कुछ समय के बाद मुझे लग रहा हाँ सही है, और एंड आई स्टार्टेड माई जर्नी एंड फर्स्ट डे व्हेन आई स्टार्टेड speaking, okay, that day I make a video and uploaded on YouTube. Why did I do? मैंने ये क्यों किया? Because I wanted to encourage you, I wanted to inspire you, because देखिए हम में से बहुत लोग ऐसे हैं जो अच्छी खासी, देखिए
एक जॉब भी कर रहे हैं, हाँ नाम के लिए क्या है, टीचर हैं, इंग्लिश टीचर हैं, भाई हम इंग्लिश टीचर हैं, गवर्नमेंट टीचर हैं, कंपटीशन फाइट करके आए हैं। बट कुछ समय बाद क्या होता है ना, आप जब उसमें आप लगे रहते हो, कुछ समय बाद आपको इतना टाइम नहीं रहता, आप अपने फैमिली और इन सब में इतना फंस जाते हो कि आपको अपने आप को यानी प्रैक्टिस नहीं कर पाते हो कि हाँ जिस फील्ड में हो, यानी आपने कि चलिए आप मैथ के टीचर हैं तो आप बस वहीं तक ही रह जाओगे, आप कभी उसमें जाके फिर बार बार आप प्रैक्टिस नहीं करोगे। जब आप प्रैक्टिस नहीं करोगे ना, कुछ समय बाद आप भूलने लग जाओगे। एक सीधी सी बात है, सीधा सा फंडा है। और इंग्लिश स्पीकिंग तो आई थिंक दस कोई अगर पीएचडी भी होगा ना, अगर उसमें स्किल नहीं है टॉकिंग की, तो वो इंग्लिश स्पीकिंग नहीं बोल पाएगा। और अगर कोई कुछ भी नहीं पढ़े हुए, इवन वो थर्ड या फोर्थ में भी है, अगर उसने बचपन से इस एटमॉस्फेयर मिला है, नेचुरली उसे मिला है इंग्लिश में, तो वो इंग्लिश करेगा, इंग्लिश बोलेगा, यू नो दैट। सो इंग्लिश स्पीकिंग इज अ डिफरेंट स्किल। ओके, सो अगर कोई सोचता है अरे मैं टीचर हूँ, अरे मैं पीएचडी किए हूँ, अरे मैंने एमकॉम किया है, मैं इससे मास्टर डिग्री ली है, मैं स्पीकिंग अगर मैं करूँगा, किसी के सामने बोलूँगा, अगर मैं गलत बोल गया तो लोग मेरा मजाक उड़ाएंगे कि अरे टीचर है तब भी नहीं बोल पा रहा। सो दिस इज अ सेकेंड रीजन। Okay, I started my journey and make a video and uploaded on YouTube. Why? Because if I can do that, why are you not? Why you can't? Okay, देखिए, फर्स्ट आप स्टार्ट करोगे आपकी जर्नी, आप अपनी जर्नी को स्टार्ट करोगे तो कोई ऐसा तो नहीं है आप एक्चुअल ही फर्स्ट डे से ही फ्लुएंट हो जाओगे। नहीं, कोई नहीं कर सकता फ्लुएंट। तो मुझे लगता है सर नेटिव स्पीकर भी इतने फ्लुएंट नहीं हो सकते। समटाइम्स दे आर डूइंग मेनी टाइप्स ऑफ मिस्टेक्स। ओके, सो this is a new for me English speaking, and I'm not feeling shy, I'm not feeling that someone laugh at me when they watch my video. I'm not feeling well because this is a skill. Okay, this is a skill. Okay, I am learning this skill and I am a beginner, I am a learner. So after sometimes I feel, after sometimes I will fluent in English, I will speak English like a native speaker. So that day I made a video and uploaded on YouTube because I wanted to encourage you. इसमें कोई शर्म की बात नहीं है कि आप पढ़े लिखे हो, आप इंग्लिश नहीं बोल पाते, नहीं बोलता, because English is not our native language. English is a secondary language, okay? And we have not habitual to speak this language. So I can't speak in English. That's it. It's not a big deal to speak in English. It's easy. But when you want, जब आप चाहोगे तब इंग्लिश बोलना आपके लिए बहुत सरल होगा। बट आपको थोड़ा शुरुआती में इनिशियली टाइम पर आपको थोड़ा उसमें एफर्ट डालना पड़ेगा। So that's I make a video and uploaded on YouTube, and this is my 100 days challenge. So I make a video every day, and you can see, you can check out my videos. Every day I was improving day by day, and today in front of you I am sitting in front of you and talking with you in English. I am not say that I am good in English, I am so perfect in English. Still I am learning this language. Still I am do many types of mistakes, even very silly mistakes. But I am learning. I am a beginner. So that's why I am doing mistakes. So what? Okay, because English is not our native language. English is a secondary language. I am learning a skill. So that's why I made a video and uploaded on YouTube. And friends, thank you so much, thank you so much मेरे सभी सब्सक्राइबर को थैंक यू कि उन्होंने मतलब किसी भी मेरे किसी सिंगल वीडियो में मैं बात अच्छी इंग्लिश में बात कर भी नहीं पाती थी, किसी ने भी मेरा कोई ऐसा कमेंट नहीं दिया जिससे मैं डिस्करेज हो जाऊं। सो थैंक यू सो मच। इवन एक भी कोई भी अगर कमेंट आया ना, सभी ने एनकरेज किया मुझे। So thank you for this, and friends, and this is my technique when this is my childhood method. Okay, I wanted to learn anything and I started to teaching that thing others. Okay, this is my method फॉर लर्निंग। ओके, अगर मैं किसी चीज़ को सीखती थी ना, तो ये मेरे बचपन से ही आदत थी कि मैंने किसी चीज़ को सीखी और उसको सीख के दूसरे दिन ही उसको सिखाने लगती थी। ये सो दैट इज़ माय मेथड फॉर लर्निंग दिस लैंग्वेज। ओके, नॉट लर्निंग दिस लैंग्वेज, स्टिल मेरी बचपन से ही आदत थी। अगर मुझे कोई चीज़ सीखनी है तो फिर मैं उस चीज़ को सिखाना ही शुरू करती, क्योंकि सिखाने से बहुत जल्दी सीखते हैं।
So friends, that's why I am learning this language, and I am here in front you because I wanted to encourage you, I wanted to inspire you, and what tips and what method I have applied on my journey. So you can watch my all the videos, okay? And in my previous video I have given so many methods, so many technique, okay? And watch the video, and if you will follow the video, the methods, and I'm sure all the tips, all the tricks will make you will fluent in English, okay? So friends, this is my journey, this is my experience, and if you want to fluent in English, if you want to speak with me, okay, so you can give your WhatsApp number in comment box. I make a WhatsApp group, okay? So friends, I hope you like my video. If you did so, please give it a like to share with your friends and family, and let me know in the comment box how did you like my video, because I love to read your comment. So friends, we will meet you, we will see you in the next video. Till then, Jai Siya Ram.